actually going to work on Google Colab. Okay, so we are going to work on what? We are going to work on Google Colab. So I'll just share my screen here, and you can write in the search bar Google Colab. Okay, just write it like this, Google Colab. And when you get the first suggestion, click on this suggestion. It will ask you to log in, just log in there. So why I'm asking you to do this? Because you will need a place to write the code that we are going to do today. So that's why you need to open Google Colab and start working on it. Okay. So please just open the Google Colab, sign in. And once you have signed in, you can go here in file and click on new notebook. You will get a similar page like mine. There's small notebook. Take some time, but it will come. Yeah. So this is how your notebook should look like. Okay. So I want everyone to open this. And once you are done, you can write yes in the chat or why, so that I can understand that you are done with this. Great. Okay. So what we are going to do today, I'm going to share a link with you. In that link, you will see we'll have our data. Okay, my data is there in that link. I hope we are both comfortable with Hindi and English. Okay, so I'll try to switch between both the languages just to make a harmony between them. So what we want to do, we are going to work with Python. Okay, and here while working with Python, we are going to basically try to work with Pandas, Matplotlib, etc. Okay, we are going to use a small data set of patients who have diabetes. Okay, and I'll just share the link with you. When you click on this link, you can see I'll share here. This is the link. Just please click on this. Can everybody see the data? I'm not sharing anything on the screen. I hope everybody can see the data. I've sent the link already. Okay. Now we need to download this data. Any idea on how you will download this? Think of it. I'll give you questions so that you can also think of it at the same time. Yeah, you can right click and save it as a CSV file. Okay. So you can save it as a CSV file. Simple hai. I'll also show you how we can do that. You can right click, save as my CSV file का option आएगा. You can try that out and save as CSV. Even TXT file also works. That's up to you in which format you want to do. Once you click on the link, okay, right click and save as में जाके just save the file.
Everybody who is done, can you write yes in the chat? Good. Now, once you are done, I'll just share my screen with you once and let's see how it is downloaded. So this is my screen. Okay. I opened a file that I have downloaded. So this is how I see it. So if we see, these are all tab separated values. Do you know what a tab separated values are? Do you know tab that is there in your keyboard? Just above caps, there's an option of tab. You can see in your keyboard caps के ऊपर tab का option होता है. Can everybody see that? So basically, CSV stands for comma separated values. If you have some values that are separated like this, okay, these are separated with commas, so we call them CSV files. Okay. Similarly, when we have something like the one that we have here, that are separated with tab, 10 के बाद tab दबाओ, 20 के बाद tab दबाओ, and so on, you will have some values that are separated with tab. Okay, so these are called as your TSV files. These are tab separated values. Okay, so this is CSV, this is TSV. Clear now? Guys, you need to join on time. I'm sorry, but it's really, concerning for other people as well. So last time I'm sending the link. So now we understand what TSV files is. And if we see, these are all tab separated. You want to check it out? Just do backspace here. Once you do the backspace, you can see age and sex are all together. Just click on tab and you will see, oh, they are actually coming at the same place. These are all tab separated. Okay, so you can go and change the extension of this if you want. You can rename it and do diabetes.tsv. Can we all do this? Can we rename our file? Do you guys know how to rename? यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है ऊपर. diabetes.tab है. I'll just do TS. Done. So I've just changed the extension. Done? Good. Clear? How we saved the data? I did not do anything. I just went here, right click, save as पे जाके save कर दो. It will be saved in TXT format. We just want to save it in TSP. Okay. So once you have saved it, just change the extension to TSP. I hope we are clear till now. Okay, let's proceed further. Now, I'm going back to my notebook. We will be writing all our codes here. Okay, you will see nothing is here right now, but we'll be writing our codes like this in a cell. And once we want to execute the cell, there is this play option, right? In the left hand side of that, you need to click on that. This option will help you to run your code. Chalo. Let's start. I will help you with libraries. Okay. हम libraries use करेंगे साथ साथ we'll be understanding how the things are working too. So be very careful. If you have any doubts, you can write in the chat. Mostly I'm looking at it. Okay. So please just stay with me. I'll also give you time to complete that. So first listen to me and then do it by yourself. Okay. So we are going to talk about three particular libraries here: NumPy, CSV, and Matplotlib. Okay. In Python, whenever you want to work with libraries, okay, the thing is that you have to import it. Okay. Import karna hota hai. What are libraries? Let's also talk about that. Every library that we have in Python has a particular function. Okay. For example, we will be using Matplotlib.
Matplotlib is generally used for visualizing your data, basically for making bar graphs, pie charts, scatter plots, etc. Okay. NumPy, on the other hand, is used for numerical computations. Basically, when you want to work with huge number of mathematical data, you can work with NumPy. Pandas is used for cleaning your data, reading your data, manipulation of your data. It's used a lot. Like any data scientist, any data analyst uses Pandas a lot. It's the most famous library. Okay, so let's first import Pandas. I'll tell you how to do that. To import Pandas, you just have to write this. Import Pandas. Okay, and I am going to give it an alias. Alias क्या होता है? Alias is a nickname. So I am saying कि import pandas as PD. That means I'm giving pandas a nickname PD. Why I'm doing that? Because in future, whenever I want to call pandas, instead of writing pandas.xyz, I have just made a short form. I can write pd.xyz. Okay, so I am just going to use PD instead of pandas whenever I will be calling it. That is why I have given it an alias. Okay, so I am going to import pandas first. Let me also give you a small intro of pandas. I'll send you this tutorial to WC School's basic tutorial. So what is Pandas? Pandas is a library that is used for working with data sets. Okay. It can analyze your data, it can clean your data, help you explore your data, help you manipulate your data, and so much more. Generally, Pandas, the reference comes from Python data analysis. Okay. Why to use Pandas? It can quickly analyze your big data. It can help you with some statistical data for your data. Pandas is used for cleaning of your data sets. Very important step. It makes them readable and relevant. And these are some of the use cases of pandas. Okay. These are some things that pandas can do. It can find some correlation. It can find average value, median, mode, standard deviation, max value, min value. It can do a lot of stuff. Okay. So I'm going to send you this link also so that you can save it and come to it later. I hope we are clear with why we are using pandas. Okay. So I'm going to use pandas as PD. I have just given an alias. Okay. Similarly, for visualization purpose, I am going to import matplotlib. Matplotlib mein there is a submodel pyplot. If you can see, it's already giving me the suggestion. There's a submodel pyplot, जिसमें all the visualizations that we want are already present. So I'm going to just write import matplotlib.pyplot and इसको I have given an alias of PL. Okay. So I am using pandas for manipulation of my data. You can also, if you want to read about it, you can also just hover over it. For example, if I want to understand this, I can hover over it and it will basically try to give me some information regarding. कभी भी ऐसा हो आपको समझ नहीं आ रहा है कि why something is used, you can also use the help of Google Colab here. Okay, they also have a lot of ways in which you can ask this question. Imagine you want to talk about this. Okay, just highlight it, give it a second, and it will automatically load and tell you what this is particularly doing. But anyways, let me tell you, matplotlib आपका क्यों use होता है? You can see it's showing module pyplot. ये आपका use होता है for making some visuals with the help of your data. Okay. So I have just imported two libraries till now. I will just run this cell. That's it. Any doubts in the first code cell? Clear? But basic, I have told you how to import the libraries. Okay. Let's proceed further. Now we have our data stored in our system, right? Now we want to interact with our data. We want to first read the data. Read the data means just seeing what's inside the data, just able to read what is there in our data. So for doing that in Google Colab, you have this option of files. Okay. Here you can upload the files from your computer
to this place. So I'm just going to import diabetes.csv. It will give you warning. Just accept that. And you will see automatically that it is here. Diabetes.tsv.txt hai. I'll change this again. Let's save it as something. It's done for me. So diabetes.tsv I got. So you can have a tab separated, what do you call, file like this. And once you import it, I'll import again. It will show here. So I have two values. I'll also import this one. So you can see tsv tab.txt, tsv.txt is given. It's fine. Okay. I hope this is clear. You can also rename your file here. Okay. I have renamed it here. So this is how you upload your files here so that you can read it. I want you all to try and upload the file. If it shows any issue with name, try using the rename option. Okay? Clear? Let me know once you are done with importing your file. Go in the files option. There's an option of uploading the file here. And once you upload it, it will show. Done? Good, guys. Now I'm going to read this file. Okay? To read the file, we have a method in Pandas. Okay? I'll show you. So in Pandas, we have a method called read TSV. Okay? You can also make it CSV, TSV, that's up to you. Okay? Let's try with TSV first. Read TSV. And here I'm going to copy the path of this file. Just copying the path, put it here like this within the quotation marks. Don't forget the quotation marks because this is a path we have to use it with the help of quotation marks. I'm going to store it in a variable called as x, right? That's it. That's what I've done. ठीक है? अभी मेरे को इसने issue दिया कि TSV is not an option. So we can also store it as CSV. Okay? आप Excel file पढ़ सकते हो, CSV file पढ़ सकते हो. Let's store it as CSV and see. TSV, CSV. यहाँ पे भी CSV आएगा. हो गया. Now I'm going to run and see what's inside this. So if you see there's some issue with our data. Can anyone tell what's this issue? Anyone? Yes, the content that you have is still in TSV format. It is not in CSV. Okay, so we have an issue of that. कि जो है हमारे पास जो format है, that is still in TSV. So that is why you can see there is /t, etc. written. So we are trying to read these kind of values, 10, 20, 30, 40, 50. But we don't have anything like that. We have values separated with the help of tab. So that is why it's giving me an issue. Okay. So that means we have to first correct the data before reading it. I'll give you 2 minutes. Think about it. You can use your browser. You can use anything and tell me how will you be able to correct this out.
You can use your browser, guys. It's totally fine. In real world, you are allowed to use it. Come on, guys. It's okay. Please try to answer. Replace tab with comma. Is it possible to replace it for so many rows? You want to do it manually? Isn't it a tiresome process? Everybody saved it in TSV only. We want to convert into CSV to read the file. Chalo, let me help you. बहुत आसान था. Okay, I'll tell you how. If you come to this question, right? आपके पास same question आता. If I am at your place, I have so many co-pilots, chat GPT, etc. to work with. Okay, you have to go and ask them, right? So the first method that you could have utilized is there are so many converters present from TSV to CSV, free online converters. You can try those out. Okay. Another way in which we can change those values, I'll show you. I'm going back to my file. Okay. Let's just assume this is only TSV. Okay. ये आपका TSV ही है. I am going to use the same method, read CSV. I'm going to say this is my TSV file. I will have an option of adding a separator. Okay. What is a separator? I'll tell you that. If I was at your place, I would have written the similar question. How to read TSV file with Pandas? I'm using Copilot. It gives the best answer. We are going to use the same method that we are using till now. We are just going to tell that we have a separator here, that we should use a separator that is /t. That means the file that we have, the values there are separated with the help of tab. Okay, there's a tab spacing between them. Okay, so whenever you want to read the data that is of tabular format, you can use the read CSV method only, and you can say that my separator is /t. That means my file is tab separated values. Okay, there's the word separated here also. And here पे भी you can write separated, like sep is equals to /t. That means tab. Clear now? So here, in place of my separator, what I have to write? I have to write sep is equals to /t. That means my separator is what? Separator is tab. Clear हो गया? ठीक है? See, when you are going to work in any company, you will encounter these things. Anybody who is going to work as SD, data analyst, etc., you should know how to Google a problem. Okay? Every time you come to a certain issue, learn how to go to the solution of that. Right? So now we have read a tab separated file, TSV file, using the read CSV method. Okay. You can also read CSV files like this using the read CSV method. आपको the separator देने की जरूरत नहीं होती because it automatically understand that your separator is common. ठीक है? So I used read CSV method. I added my content that was here. I copied the path of it by using this option, and I said that my separator is tab.
and then I'm just printing out X. One more thing, if you want to make the code block, for example, I want to make a code block below it, I can click here, or there's an option of Control plus M and D. Okay, if you're using Colab for the first time, you should know it. Okay, so when I printed out X, we are seeing something. Can you see this data, age, sex, BMI, BP, S1, S2, and so on? Everybody can see. It has given me some information that we have 442 rows and 11 columns. Okay, the basic information we have got. If you have any doubt, you can write in the chat that you have a doubt, you're not able to do something, I'll answer. Okay, so we have just imported, and as you can see from the current data set, we have 11 columns, right? Now, we are going to talk about the summary of the data. Very important to know what is the summary of the data. Let's go and talk about it. आपका जो data है, that is stored in X. Remember that. That data is stored in X. Okay. And what you see here, does it look like an Excel table to you guys? Is it similar to Excel table? ऐसा look दे रहा है? Yes. Okay. In Pandas, we are calling this as Google Colab. Sorry, Google Colab data frame. In Pandas, we call this entire data as our data frame. Okay, this is our data frame. Okay, in data frame, it is very similar to Excel. Excel में आपके पास ऐसे columns होते हैं, right? इधर भी आपके पास columns and rows होते हैं. Ma'am, how the file is displaying on your Colab? आप phone से join किए हो क्या समय? You have to go here, upload your file. This is the file that is there, right? So that is how I can see my file. You have to go here, upload the file here. It will automatically come here. If it's not coming, please refresh it once. Upload करना पड़ेगा पर आपको पहले बता रही हूँ. Click on this option and upload. Okay, Samyak, let me know in case you have any. Now, we have some very beautifully defined methods to get the summary of our data. Okay, so let's get summary of our data. I'm going to use X, that's my data, okay, and dot info. This info method helps you to provide a concise summary. अगर आप देखो आपके सारे कॉलम्स की वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, एज है, सेक्स है, बीएमआई है, बीपी, S1, S2 and so on. Then it is telling you how many non-null values are there. It is showing 442 non-null values. That means अगर आपके पास 442 रोज थी और हर रोज में 442 नॉन-नल वैल्यू, हर कॉलम में 442 नॉन-नल वैल्यूज हैं, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा में कुछ भी एम्प्टी नहीं. Did you get my point? What I am trying to say? 442 रोज हैं आपके पास, हर कॉलम में 442 वैल्यूज है. अगर किसी कॉलम में you would have gotten 440 values or 435 values, that means 7 values are missing or 5 values are missing. But we have the count as perfect. Okay. You have to print. I have stored it in X, Samyak, and after that I am just writing X. आप print X भी लिख सकते हो. If you want to see something on the screen, you have to use the print method. Okay, clear? So this is your columns. This is the D type. D type means data type. Data type may we have integer 64. You can skip for now. Int, float, int, float, int. Does anyone know what int stands for or what float stands for? Int stands for an integer. कि मतलब this is an integer. Integer values मतलब positive or negative values, but without a decimal. Okay, clear? Floating numbers are your decimal numbers. So it is telling you अभी कि age में आपके पास 442 non-null values हैं and they are of integer data type. Okay. Similarly, it's telling you that sex में आपके पास 442 non-null values हैं integer data type. So you got a very concise summary. Clear? Did you understand why we are using info method? We are basically seeing
what is the data type, and are there any null values present? You can just look at it and see if we don't have null values present here. Okay, so the info function in Python provides a very concise summary of your data frame. That data frame is this. X हमारा data frame है. 1 second. This is your data frame, and either we have got no summary of it. To use this method, you have to just call it with the name of your data frame, and आगे आपको dot info लिखना. Okay. It is also telling you that this is a data frame, Pandas data frame. Okay. So we understood a very small summary of the data. Okay. So अभी मैं आपको थोड़ा सा डेटा का वो दे देती हूँ कॉन्टेक्स्ट. एज आपको पता है, सेक्स आपको पता है, बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, बीपी इज ब्लड प्रेशर, S1 S2 S3 टिल S6 आर डिफरेंट ब्लड मेजरमेंट्स. ब्लड के मेजरमेंट्स लिए हुए डिफरेंट हैं. ओके. एंड वाई इज द मेजर कि आपकी डिजीज कितनी बढ़ रही है. ये थोड़ा सा मैं आपको डेटा के बारे में बता रही हूँ. ओके. So let's proceed further. Now, let's study this data set and using the current methods that we have, get the average values. If for example, हमको किसी का average निकालना है, कैसे निकालेंगे वो समझते हैं. ठीक है. पहली बात तो आपके पास अगर आपको statistical values चाहिए for columns, you have a beautiful method here called as the describe method. You can just write x dot describe. बस इतना लिखना. अब आप ध्यान से देखो यहाँ क्या आ रहा है. आपके पास आ रहा है काउंट कि एज कॉलम में इतनी वैल्यूज हैं. एज कॉलम का मीन इतना है. एज कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है. एज कॉलम में मिनिमम वैल्यू इतनी है. एज कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू इतनी है. डू यू गाइस नो अबाउट 25, 50 and 75 percentile? No, it's fine, I'll tell you. But before that, tell me, were you able to see so many things? आपने मीन देखा सेक्स का, बीएमआई का, बीपी का, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, मीन देखा. Is it cool? Like you just wrote a single line and see how many values we are able to get with the help of that single line. Somebody asked you, what's the average age for the data that we have? You can just राइट दिस लाइन एंड आपको एवरेज एज सिर्फ एज की नहीं, आपको सारे कॉलम्स के मिल सकते. राइट. इट्स वेरी कूल टू जस्ट डू इट. राइट. नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज 25, 50th and 75th percentile. बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड. अगर आप लोगों को पता है, आई थिंक एक दो लोगों को ही पता है, एक बार रिवाइज कर लीजिए. सी, सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉक्स. बॉक्स प्लॉट का एक बहुत ब्यूटीफुल सा आर्टिकल बायजूस का है. आई लव दिस आर्टिकल. विल सेंड अ लिंक टू यू एज वेल. शेयर इट हियर. Yeah. Now, in the box plot, okay, this is a type of a visual. Okay. इस विजुअल में आपके पास ऐसा ऐसा आपका एक विजुअल बनता है सिंपल. एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक बॉक्स होता है, और एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ऐसे. ठीक है. इसे इस बॉक्स की वजह से इसको बॉक्स प्लॉट बोलते हैं. ठीक है. Now, in this box plot, you have something called as Q1. This is your Q2, this red line. This is your Q3. Q1 is called as your 25th percentile. Whatever you are seeing here, this is your Q1. Q1 बोल सकते हो या 25th percentile बोल सकते हो. This red line is your Q2, or you can call it 50th percentile. This edge of the line, ये आपकी जो ये वाली line है, this is your Q3. This is 75th percentile. Okay, now let's understand this Q1, Q2, Q3 का significance क्या है. Simple. तो Q1 जो आपका बताता है, अगर आप देखो, ये आपको बताता है
आपकी 25th परसेंटाइल नाम से पता चलता है कि जो आपका डेटा है, अगर हम एक विजुअल बना के देखें तो इस लाइन पे जो आपका Q1 है, इट सेज इस लाइन पे कि 25% ऑफ योर डेटा lies in the left hand side of this line and the rest 75% of your data lies in the right hand side of this. ओके, तो Q1 का मतलब क्या है या 25th परसेंटाइल का मतलब क्या है? ये आपको एक वैल्यू दिया, ये आपका एक वैल्यू दिया, उस वैल्यू के बेसिस पे उसने बताया कि ये 38.50 कहीं तो होगा, कहीं यहाँ पर मान लो ये है, तो वो आपको बोल रहा है कि 25% डेटा आपका इससे ऊपर है, ठीक है, और जो 75% डेटा जो आपका बचा हुआ है उसके बाद। Okay, so this is your Q1. Q2 is your 50th percentile. That means it divides the data into two halves, two equal halves. Okay, ये आपका Q2 होता है। तो अगर हम यहाँ देखें, उसने बोला 50 ही मेरा Q2 है, मतलब 50 के लेफ्ट में we have 50% of the data and 50 के राइट में we have the other 50% of the data. Similarly, we have 75 percentile. उसने बोला 75 percentile 59. ओके, 59 है, इसका मतलब ये है कि 59 की लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 75% ऑफ द डेटा है एंड 59 के राइट हैंड साइड में वी हैव द लेस 25% ऑफ द डेटा। ओके, सो दिस इज हाउ द बॉक्स प्लॉट जनरली वर्क्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। वो हाउ वी डू इट, वी हैव डेटा लाइक दिस। मान लीजिए हम एज का निकाल रहे हैं, ये हमारे पास एज है, एज का कॉलम है, उसमें ये वैल्यूज। जब भी आपको बॉक्स प्लॉट करना हो, हमेशा पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। सो आई एम गोइंग टू अरेंज द गिवन डेटा दैट आई हैव इन असेंडिंग, 9 10 12 14 15 23 42। ओके, इसके बाद यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम। तो मिनिमम आपका 9 है, मैक्सिमम आपका 42। ओके, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज कैलकुलेटेड, अगर आपको नहीं पता था अब आप सुन लो। मीडियन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास मीडियन की वैल्यू नहीं है, बट ये 50% इज Q2 इज योर मीडियन ओनली। हाउ इज दैट कैलकुलेटेड? जब भी आप अपना डेटा अरेंज करते हो, यू आर अरेंजिंग द डेटा वट एवर इज इन द सेंटर। अगर देखो, दिस इज इन द सेंटर, दिस इज योर मीडियन, ठीक है, दिस इज योर मीडियन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर Q2। ये मीडियन आपका Q2 या फिर 50th परसेंटाइल होगा इस डेटा के। सिमिलरली लेट मी हेल्प यू विथ Q1। अब Q1 कैसे निकालोगे? Q1 निकालने के लिए आप मीडियन से डिवाइड करोगे, ठीक है, मीडियन से यहाँ पे आप Q1 निकालोगे, यहाँ पे आप Q3 निकालोगे। Q1 कैसे निकलेगा? Q1 will Q1 will be calculated once you have the middle value of this part. Middle value of this part is 9 10 12। इसका middle value क्या है? 10। So this is your Q1। Okay, this is your Q1 और 25th percentile। Similarly, अब आपका Q2 आपको पता है कि 14 है। Q3 कैसे निकलेगा? इसका मिडल वैल्यू, इसका मिडल वैल्यू क्या है? 23। So the middle value of Q3 is 23 and you know it. So this is your 75th percentile or Q3। I hope now you all understood what is Q1, Q2 and Q3। Clear? आपने सॉर्ट करके निकाला है डेटा। व्हेन यू हैव इवन नंबर्स, अगर आपके पास दो हैं मिडिल में, तो आप उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है? गॉट इट उर्मी? I hope everybody that this is clear. Okay. Now, this is how Q1, Q2, and Q3 were calculated here. Okay. So we used the describe method and we got so many statistical information about our data. I also helped you understand box plot because it's an important measure. Now, we are going to compute some values for our data. अगर हमको individual values निकालनी है, let's find that. So the first thing
that we are going to find out is mean and variance. Okay, mean and variance are very important. Okay, so let's find out the mean. Mean आपका एवरेज भी होता है. मान लीजिए आपको मीन निकालना है. किसका निकालते हैं? बीएमआई का. बीएमआई का मीन निकालना है. तो आई एम राइटिंग अ कमेंट हियर. कैलकुलेटिंग mean of BMI. Now look at this carefully. I will give you time to do it, but please focus here. So I'm going to write the name of my data frame first. X is the data frame. X में मुझे क्या चाहिए? X में मुझे चाहिए BMI. तो आप देख सकते हो ऑलरेडी वो मुझे ऑप्शन दिया BMI का. I'm going to click on it. X BMI. Okay. उसके बाद I have to get the mean. So I'm going to write dot mean here. Okay. I am going to store this in some variable. I am making the variable mean BMI. उसमें मैं X में से BMI कॉलम का mean निकाल दूँ. ठीक है? Then I am going to print out mean BMI. कि BMI की mean value क्या है. तो you can see, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो. If you want BMI का mean या फिर age का mean, if you want separate means, आपको सबका mean नहीं चाहिए एक साथ, you can also call the value by its column name and use the dot mean method in front of it. Clear? Good? Understood? अब इसकी min and max value भी निकालते हैं. ठीक है? min and max निकालेंगे. Same, बिल्कुल बिल्कुल same. I'm writing min BMI is equals to X. I'm going to write BMI again. You can write it in quotation marks, double quotation marks or single. That's up to you. Dot min. Min का भी निकाला. मैं इसे print भी करवाऊंगी. और ऐसे ही I'm going to use max. I'm going to calculate max BMI. Same, बिल्कुल same, but I'm going to use BMI dot max here. Okay. Then I'm going to print out everything. Print min BMI, print max BMI, and so on. These are the values of your min BMI, max BMI, and mean. Yes, X is the name of your data frame. Cool? You understood how this is working? आपने mean, min, max, count, standard deviation, आप सब ऐसे for a particular column you can calculate it. Okay? Whatever we are doing right now, you may have heard a term of data exploration, right? इसको ही बोलते हैं data exploration. We are exploring the data. Okay, we are just seeing what is inside our data. चलिए आगे बढ़े. आप अगर आपको समझ या बता सकते हैं पहले में. किसी को कोई डाउट, प्लीज लिख दीजिए चैट में. आई विल आस्क यू टू शेयर योर स्क्रीन एंड हेल्प यू सॉल्व इट. अगर नहीं है प्लीज नो लिख दोगे चैट में ताकि मेरे को पता चल जाए कि यू आर डन. Thanks everyone. Let's proceed then. If you have, please feel free to ask, okay? There's no barrier here. आप पूछ सकते हो. If you're learning for the first time, I totally get the doubts हो सकते. Okay? Now, I have a question for you. Now, you are going to give me BP का. BP की values हो गया. BP में मुझे क्या चाहिए? I'll tell you. We are exploring BP now. BP में मुझे चाहिए mean, ठीक है? And I want STD,
that's the standard deviation, and minimum and maximum, BP में, okay, BMI में नहीं, BP में. This is a question that I want you guys to do. Once you are done, send me the answer privately. आप मेरे को privately chat में भेज सकते हो. Python is case sensitive, Harika. Python is case sensitive. Mean, standard deviation, min and max. And somebody asked me for variance. Variance कैसे निकालते हैं? I'll tell you. Variance निकालने के लिए आप dot var use कर सकते हो. जैसे dot mean I have used, you can use dot var method. Come on, guys. This is the question for you. You have to get this out. Good, Arup. But Arup and Karthik का आंसर बिल्कुल अलग आ रहा है. चेक करो किसके लिए आप निकाल रहे हो. Min, max, mean, standard deviation, and so on. Everybody is sending me very different answers. नहीं order नहीं, answers नहीं different. ठीक है, let's come. I'm going to use similar variables. Okay, just going to change their name. So mean BP is equals to X BP dot mean. आपका मीन की वैल्यू ऐसे निकालोगे आप. ठीक है. Similarly for min BP, you will do X, that is your data, BP dot min. For max BP, you will do X BP dot max, right? And for standard deviation is your STD. So I'll write for STD BP, you can use this method, STD method. आप में से किस किस को पता है what is standard deviation? बताओ, पता है आपको या मैं एक्सप्लेन करूं? I can explain, but you guys have to answer first if you know about it or not. अगर आप लोगों को नहीं पता ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ. What I am doing here is I am printing out in such a way ताकि मुझे clear रहे कि what I am printing out. If in the first one I just printed out the values, okay, but here I can print out like this.
कि mean BP is this, max BP is this, and so on. Okay, so what I'm doing, I am just writing the value that I want to be printed out. पहले एक बार इसको देख लो, फिर we'll go to standard deviation. So what I'm doing here is whatever I want as my message, पहले मैं उतना लिखती हूँ. Mean BPS, मुझे ये message चाहिए, ठीक है? Simple, I'm writing it in quotation marks. Why? Because in Python, it is a necessity that whatever you have that is in text nature, like आपका नाम, your city, your school name, your father's name, your mother's name, they are all text. WhatsApp messages are like your text because they are made up of characters, right? So whatever you have in text, you have to write it in quotation marks. ठीक है, तो हमने यहाँ पे इतना लिखा. उसके बाद आई एम सेइंग STR मीन बीपी. व्हाट आई एम डूइंग, मीन बीपी मेरे पास एक वैल्यू है, राइट? एक वैल्यू आएगी मीन बीपी की, बट दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी एन नंबर, राइट? इट्स अ नंबर, इट्स एन इंटीजर और अ फ्लोट, जो भी वैल्यू होगी. तो आई एम सेइंग कि कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट इट आउट. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो देखो अभी एक एरर आएगी. सिंपल एरर समझना. Yeah. Now see, it is saying can only concatenate str to str. It is saying मैं float नहीं concatenate कर सकता. That means it is saying concatenate का मतलब यहाँ पे प्लस है. तो आपको बोल रहा है कि मैं एक, ये तो एक string है, ये एक number है. I'm not able to add two different type of data together. तो मैं इसको प्लस नहीं कर पाऊंगा. उसने आपको ये बोल, ठीक है? सो इस वजह से I am converting this into string and printing this out. Clear, guys? पहले बताओ क्लियर हुआ? What I am printing, how I am printing? You can change. आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन बीपी, मैक्स बीपी. यहाँ पे आप वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? बट यू हैव टू कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू माय कोपायलट. आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम हिम. Explain standard deviation to me in easy manner. Please utilize this AI to your need. क्या बहुत फ्रेंडली होता है AI, यूटिलाइज इट. चलो, आपको फॉर्मूला तक नहीं जाना, ठीक है? सो लेट्स अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बोला है. आपके पास इमेजिन करो you have to have a bunch of numbers like test scores, temperatures या banana lengths. Standard deviation tells you how much these numbers vary or spread out from the average. ओके, मान लीजिए आपके पास ऐसा एक डेटा है. ओके, ये आपके पास डेटा है, उसमें एवरेज 5 है और मिनिमम आपका 0 है और मैक्सिमम आपका 10 है, ठीक है? तो एवरेज आपकी वैल्यू से बाकी वैल्यू कितनी दूर है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. कितना दूर कोई चीज आपकी एवरेज वैल्यू से बैठती है. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज टेलिंग यू how far या how much some values spread out or vary from their average. अगर हमारे पास सिमिलर डेटा है जिसका एवरेज मेरे पास मान लीजिए 10 है, मिनिमम मेरे पास -40 है और मैक्सिमम मेरे पास 100 है, तो दिस मीन्स कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं दे आर वेरी फार फ्रॉम द एवरेज. इसमें मिनिमम इतना दूर है, मैक्सिमम इतना दूर है. So that means they are more spread out. Okay, so standard deviation is a way of telling how much your values are spread out from the average value. ठीक है? It's like measuring the distance between each point from the average. 40 से average का क्या distance है? Okay? बाकी values का भी आप निकालोगे distance and आप देखोगे कहाँ पे, जहाँ पे भी आपका distance कम है, wherever the distance is low, at that place we will say that the standard deviation is low. Okay, if the numbers that you have are very close to the average, the standard deviation is small. If the number that you have is more, that means you have a lot of scattered data. मतलब आपका एक, मान लीजिए आपके पास एक एज तो 10 है, एक एज 105, बहुत दूर दूर आपका डेटा है, ठीक है? सो दिस इज हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड. क्लियर?
चैट में यस और नो। चलिए, तो हमने अभी थोड़ा सा डेटा एक्सप्लोरेशन किया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी प्रोसीड फर्दर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। नाउ लेट्स डू सम काइंड ऑफ मैटप्लॉटलिब से विजुअलाइजेशन, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू मेक अ बॉक्स प्लॉट। अभी मैंने आपको बायजूस वाली लिंक दी थी, हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट देखा था। ऐसा एक बॉक्स प्लॉट बना के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ योर डेटा, ठीक है। टू मेक द बॉक्स प्लॉट हम मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे। हमने उसको एक एलियस दिया है पीएलटी, राइट, इफ यू रिमेम्बर। तो आई एम गोइंग टू राइट पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट। एक बॉक्स प्लॉट बना रही हूँ मैं। इधर मैं बताऊंगी कि मुझे किसका बनाना है। मुझे बनाना है बीएमआई का, तो आई एम राइटिंग एक्स बीएमआई सिंपली, ठीक है। बीएमआई का बनाना है, डन। इतना करना है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। आई एम गोइंग टू राइट पीएलटी डॉट शो। तो देखो एक इसने बॉक्स प्लॉट बना के दे दिया। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, नहीं तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो एक छोटा सा बॉक्स प्लॉट आपने ऐसे ही बिल्कुल जल्दी से बना दिया। या यू कैन यूज फॉर्मेटिंग टू, यू कैन यूज एफ फॉर्मेटिंग, दैट्स ऑल्सो फाइन। Okay, so how did you make a box plot? So what did you do? You have the box plot method already defined. You just wrote the name of the column for which you want to make the box plot. Okay, and you can, if you want to see the data, you will use dot show method here. Okay, now here we have many ways of customizing this. Right now, I'm seeing a picture that is horizontal in nature. ओके, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल इन नेचर, वर्टिकल है अभी ये पिक्चर। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एज वर्ट। उसको मैं कर सकती हूँ फॉल्स, दैट मीन्स वर्टिकल मत दिखाना मेरे को। यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, 1 सेकेंड। हाँ, तो नाउ आई एम गेटिंग अ हॉरिजॉन्टल बॉक्स। क्लियर? ओके, आई कैन फर्दर कस्टमाइज इट। मेरे को अगर उसका साइज बदलना है फिगर का, तो आई कैन राइट हेयर पीएलटी डॉट फिगर। ये मेरे पास एक फिगर है, इसका साइज मुझे छोटा रखना है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा है। अगर आप देखो, मेरे को पाइथन भी बता रहा है कि ये करता क्या है, ठीक है। ये मेरे को फिगर का साइज देता है, ये मेरे को बता रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स प्लॉट की फिगर का साइज डिफाइन करेगा। वी कैन डिफाइन द साइज हियर विद द हेल्प ऑफ फिगर। सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट फिक्स साइज। फिक्स साइज मतलब मेरे को उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, ओके। सो फिक्स साइज आई एम गोइंग टू राइट हियर 8,2। यू कैन प्ले विद डिफरेंट फिक्स साइजेस, दैट्स अप टू यू। आपको जो ठीक लगे आप उसके हिसाब से बना सकते हो। मेरे ख्याल से ये ठीक है। 8,2 आपका जो फिगर का साइज है वो कम हो गया। यू कैन मेक इट मोर स्मॉलर, इट्स अप टू यू। 6,2 इज लाइक दिस, ओके। सो यू हैव मेड अ स्मॉल फिगर। आपने एक बॉक्स प्लॉट यूज किया। अगर आप ये हटा दो तब भी वो चलेगा। यू जस्ट हैव टू यूज शो टू शो द डेटा, ओके। उसके बाद इधर ही हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। मान लीजिए आपको मीन देखना है अपने डेटा में, वट एवर इज द डेटा का मीन, यू वांट टू सी इट। तो इफ वी नो, वी ऑलरेडी नो द मीन इज अराउंड 26, दैट मीन्स इधर इसके आसपास होगा मीन। तो लेट्स ट्राई एंड सी इट आउट। शो मीन्स करके यू हैव अ पैरामीटर टू ऐड। Whatever we are doing right now, guys, it's just for customization. It's not a necessary thing. आप देख सकते हो, I got the suggestion. Show means is equals to true. ये आपका मेन है ग्रीन में, ओके। उसके बाद
If you want, you can make a grid. Grid क्या होगा? जैसे आपके ग्राफ पेपर के पीछे ऐसी लाइन बनी होती है. You can have a grid like that also. Second. Okay. So I'm just making it more customizable. How many of you understood all the 4 lines that are there in this picture? फिगर फिक्स साइज के लिए हम अगर साइज कम करना चाहते हैं अपने फिगर का, इट कैन बी एनी फिगर. ओके. If you want to see change the size of the figure, you have to write plt.figure fixed size. Box plot में आपको क्या दिखाना है आप पहले वो लिखोगे. If you want it to be horizontal, you can add this parameter. Else वो आपको vertical देगा. Okay. Show means आपको क्या दे रहा है? आपको mean के लिए भी एक indicator दिखा रहा है that this is your mean, green. So show means is equals to true. That means I also want to see the mean. plt.grid आपकी लाइंस ऐड किया बस और कुछ नहीं किया, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए. एंड वी फाइनली यूज डॉट शो टू सी व्हाट वी हैव मेड. ओके. If you want, again, you can customize it more. I can write a title by writing this is a box plot for the BMI of patient. लो, इतना भी कर सकते हो आप. Nice, right? You can get the similar result with 2 lines, but if you want to make it more beautiful, you can add as many customizations as you want. Okay. मेरे को x में label चाहिए. Let's try to add that also. plt.x label BMI of patients. अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो x वाली लाइन है इसमें मेरे पास BMI of x patients लिखा है. Right? So whatever I'm doing now, whatever you're seeing on my screen, I'm just making my visual more and more beautiful, right? There are multiple methods. आप 100 line code के लिख सकते हो to make it more beautiful. Any doubts in any of these 6 lines that are written here? Please feel free to ask. I hope this is easy till now and you are understanding even if you are doing it for the first time. Cool. Thank you so much. चलिए, अब आप मेरे को सिमिलर कोड लिख के देंगे फॉर एज. एज का बॉक्स प्लॉट चाहिए. कैन यू मेक एज के लिए? See, for age, nothing to change. Just going to copy this code, paste it here. यहाँ पे BMI की जगह I have to write age. ठीक है? This is a box plot for the age of patients I'm writing. I'm going to write X में कि age of patients है यहाँ पे. That's it. खत्म. लो, age का box plot बन गया. Hardly takes a minute. Cool. I'm very happy that many of you are able to do it with me. Okay. So we have done थोड़ा सा basic pandas का, थोड़ा सा basic matplotlib का. We have understood how we can make visuals. If like you are just 1 hour in with me and you are making visuals with me, you understood what is a box plot. I know that 90% here may not even know what is a box plot.
Now you understood, you also made it with Python. That's a great achievement, guys. Congrats. Okay. Now, what I want that we should do next is we should make a histogram. Histogram पता है आप लोगों को? What is a histogram? Have you seen a histogram in your maths class kabhi? It's very famous. If you don't know what's a histogram, एक बार try to Google and see. चलो, let me show you what's a histogram. I'll just do a Google image search. ठीक है? I'll just search for you. Histogram क्या होता है? ठीक है? This is a histogram. This is figure that we generally use. ऐसा. Histogram अगर आप देखो, this is like a bar chart only, but without any spaces. आपके without any spaces होता है histogram. Okay? Generally, when you want to see the distribution of something, कि अगर आपको किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है तब आप हिस्टोग्राम यूज करते हो. अभी मैं आपको एक ब्लॉग भी दूंगी ताकि आप व्हेन यू रिवाइज यू कैन रीड अबाउट इट आल्सो. So matplotlib histogram here. Yeah, we are going to make a similar histogram. Now look at this, sending you here. So generally histogram जब आपका यूज होता है that is used for showing frequency distribution. Understand this term. Going to explain it in a very simple manner. मान लीजिए कि you asked for the height of 250 people. ठीक है? आपके पास 250 people की you want to get the height distribution. Okay? Now you will have some values, right? आपके पास ऐसा कुछ values होंगी. तो उस values के हिसाब से it makes a histogram. अगर आप देखो, there is a bin that goes from 140 to 145, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 and so on. ऐसे वो जाता है. तो this height that you see, it is showing that 140 से 145 के बीच में दो लोग हैं. आप सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अराउंड 155 से 160 के बीच में अराउंड 30 लोग हैं. ओके, सो आपको एक इंटरवल के बीच में हाउ मेनी पीपल आर देयर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देता है. ओके, इफ आई आस्क यू नाउ by looking at this visual, can you tell me what is the category in which we have the most people? सबसे ज्यादा हाइट कौन सी कैटेगरी में है? यू कैन गो एंड ट्रेस हियर. अगर आप देखो, ये आई थिंक ऐसे नीचे जाएगा 165 पे. तो इट्स शोइंग 165 से 170 के बीच में अराउंड. हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पीपल. ओके, सो यू हैव सम डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू वांट टू सी. ओके, तो सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके लिए करेंगे? एज के लिए. जस्ट टू सी कि हमारी एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज. ओके, so I'm going to share how to make it. So आप हिस्टोग्राम कैसे बनाते हो? आप यहाँ पे एक बार मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ. दिस इज योर हिस्टोग्राम. यू कैन यूज दिस plt.hist method. ओके, plt.hist method आप यूज कर सकते हो टू मेक अ हिस्टोग्राम. So let's try this out. जैसे हमने plt.boxplot यूज किया था वैसे plt.hist करते हैं. किसका बनाना है मुझे? x एज का. तो I'm going to write age here. ओके, अभी बस मैं इसको डॉट शो कर दूंगी. आई डोंट वांट टू सी मल्टीपल थिंग्स हियर. कस्टमाइजिंग इज योर चॉइस. मेरे पास एक छोटा सा विजुअल आ गया. तो अगर आप देखो तो हमारे पास मेजरली जो लोग हैं वो अराउंड 50 से 60 के पास के हैं, राइट?
Now this particular thing, अगर हम यहाँ पे भी देखें, these red, blue, yellow, green, light blue, these are called as bins. इनको बोलते हैं bins in histogram. Okay, so you can change the number of bins according to your wish. I'll show you that also. For example, इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे एक bins होता है. I'll show you here. Bins करके होता है. I'll give you a second. Try to understand how it's done. Bins is equals to, for example, if I write 20, let's see. तो यहाँ पे आपके बिन्स थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, ज्यादा हो गए. मैं लिखती हूँ बिन्स इज इक्वल्स टू 10, थोड़े कम हो गए. तो आप अपने हिसाब से यू कैन चूज एंड ट्राई इट आउट. नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कस्टमाइज इट एज वी डिड विद द बॉक्स प्लॉट. Okay, I'll give you 2 minutes, then send your code in the chat. Hopefully आप सब लोग कर पाए, right? Any doubts, guys? Histogram ne yaar, I'll try to share the recording, guys. I'll tell you. If I post about it, I'll post on my YouTube. Okay? So similarly, आप X label, Y label यहाँ पे लगा सकते हो. Let's pick it out. I'll add Y label also. I'll show you. PLT dot Y label. Y label frequency. ये लिख रही हूँ मैं. आप कुछ भी लिख सकते हो. This is a histogram. Histogram will change for the age of the patient. Age of patients, frequency, it's done. Grid अच्छा नहीं लग रहा. Let's remove grid. Or we can also have a grid for a single line. अगर आपको नहीं पता है, I'll show you. अगर आपको सिर्फ Y के लिए देखना है, let's help you with that. For example, yeah, this is the grid. ठीक है. अगर आपको सिर्फ Y के लिए देखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो. Axis is equals to Y. I want a grid just for the Y lines. So I can write axis is equals to Y. Y की lines आ गई. ठीक है? Clear? So how is it going till now? We did box plot, histogram, two box plot, one histogram.
वी डिड सम बेसिक डेटा क्लैरिफिकेशन, डेटा क्लीनिंग तो नहीं थी, एक्सप्लोरेशन वी डिड। सो बिगनर लेवल हमने काफी कुछ कर लिया, बिगनर से भी थोड़ा ऊपर ही कर लिया। वी अंडरस्टूड फ्रॉम द स्टार्टिंग हाउ इट्स वर्किंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स? गुड गाइस, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। या, लेट्स प्रोसीड नाउ। सो वी हैव डन फ्यू थिंग्स ऑलरेडी। चलो एक लास्ट विजुअल बनाते हैं आज के लिए। बात करते हैं, किसकी बात कर सकते हैं? लेट्स सी, यहाँ पे क्या है मेरे पास। ठीक है, सेक्स की बात करते हैं। ओके, सो वी हैव सेक्स में अगर आप देखो दो वैल्यूज हैं, या तो वन है या टू है। ओके, या तो वन है या टू है। वन आई गेस मेल दिखा रहे हैं, टू फीमेल दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेल एंड फीमेल, कि कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स। ओके, सो उसके लिए वी हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाते हैं, सीखते हैं कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आप यूज करते हो plt.py। पाई यूज करते हो इसको। यहाँ पे लेट्स ब्रिंग इट टू कंसिडरेशन, मेकिंग अ पाई चार्ट फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन। Also, guys, I have again kept a price for a Coursera/DataCamp subscription for anyone who is going to share their post on LinkedIn regarding whatever we did. आप अपना ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने बनाया, विजुअल्स बनाया, you can share in a PDF or a slide, whatever you want to do, and just share it. Tag me. I'll comment on your post. If you win, I'll send over to you. Last time also, I think Gunjan won in the last webinar that we did. Okay. So making a pie chart for the age distribution, plt.py, sorry, age नहीं sex distribution था. So plt.py, I'm going to write x इधर sex. Okay. इसके बाद I'm going to write plt.show. अब आप देखो ये सेक्स में इसने क्या दिखाया है। एनीवन अंडरस्टूड क्यों ऐसा क्यों दिखाया है? वहां पर तो 211 ऐसा था वैल्यू, बट उसने ऐसे क्यों दिखाया हमको? एनीवन, एनी आइडिया? Yeah, you somebody saying it is plotting the actual number. Okay, that's fine. आप अगर देखो यहाँ पे ये ऐसे दिखा रहा है, पाई चार्ट हम सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख रहे हैं, बट ऐसे दिख नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है, अगर मैं ये सेम काम एक बार हिस्टोग्राम से करके देखती हूँ, तो हिस्टोग्राम में मेरे पास ये एक डिवीजन आ रहा है कि वन में इतने हैं, टू में इतने हैं। ओके, यही काम मैं अगर स्कैटर स्कैटर तो नहीं अच्छा चलेगा, लाइन बार से करके देखती हूँ, बार से plt.bar। हाँ, कार में हाइट बतानी पड़ेगी, नहीं हाइट नहीं हो पाएगा। तो plt.py से तो वी आर नॉट एबल टू गेट द डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी तक हमने बनाया है। ठीक है, हमें नहीं डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है सेक्स का कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू आस्क यू वंस अगेन, व्हाट डू यू थिंक विल बी अ बेटर विजुअल ऑफ शोइंग दिस? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है, आप क्या विजुअल यूज कर सकते हो? दीज आर द ऑप्शंस।
बार्स में सी, बार्स में दी ऑप्शन है, where is the bar? हाँ ये बार्स में whenever you want to make something आपको यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ती है, राइट राइट. So what should we do? I'll give you 2 minutes. Think about it. 2 मिनट आपको दे रही हूँ. Yeah, the value should be the count of the numbers of 1 and 2. कि 1 कितने हैं and 2 कितने हैं, right? Good. Will you try this as homework, guys? इसे try करोगे homework में? Pie chart for sex distribution. Can you write yes if you're willing to try this? मैं आपको एक और विजुअल इतनी देर में बता दूंगी अगर आपको देखना है. I hope everybody can try this out as homework. Simple. ठीक है? Good. Use Google, use Copilot the way I use. आपको मिल जाएगा आंसर. ठीक है. Hmm. Urmi has already done. Value. Stable. Good. 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 आगे बढ़ते हैं. 1 second. We go ahead. ठीक है. एक स्कैटर प्लॉट बना के देखते हैं. लास्ट हमारा विजुअल होगा. नाउ हाउ टू मेक अ स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए यू हैव टू यूज scatter. Okay. So the purpose by which you make a scatter plot is that you can visualize the relationship between some variables. ठीक है. मान लीजिए एज के साथ आपके पास आपका बीपी बढ़ रहा है तो एज एंड बीपी का क्या रिलेशन है. यू वांट टू कोरिलेट इट. यू कैन मेक अ स्कैटर प्लॉट. ओके. सो you can make a scatter plot for what? You can make scatter plot to visualize the relationship between any two variables, that is your choice. Okay. Now, to make a scatter plot, for example, I want to make the scatter plot between age and BMI. मैं यहाँ पे age डालती हूँ and यहाँ पे I'll put BMI and I'll do PLT dot show. अब देखते हैं कि एज के साथ BMI बढ़ रहा है क्या लोगों का. Let's see that. तो हमारे पास ऐसा कुछ रिलेशन तो अच्छा आया नहीं, राइट ऐसा कोई सही रिलेशन तो नहीं आया. लेट्स सी BMI एंड वाई. BMI एंड वाई. तो अगर आप देखो तो ये आप देख सकते हो जितना BMI ज्यादा हो रहा है जनरली वाई इज मोर. दैट मीन्स अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो BMI इज योर बॉडी मास इंडेक्स. ओके. एंड वाई इज नथिंग. वाई इज योर मेजर कि अगर डिजीज आपकी बढ़ रही है या नहीं. तो दैट मीन्स अगर आपका BMI ज्यादा है तो देर आर मोर चांसेस कि आपकी डिजीज बढ़ेगी डायबिटीज की. ओके. डायबिटीज की डिजीज बढ़ेगी. तो वी गॉट अ स्मॉल रिलेशन. अगर आप देखो ये यहाँ से छोटा से होके बड़ा जा रहा है. दैट मीन्स जनरली जिनका BMI ज्यादा है उनकी जो डायबिटीज की इश्यूज है वो भी ज्यादा हो रहा है. ठीक है. अब सेम रिलेशन हम एज के साथ निकालते हैं. एज एंड डिजीज प्रोग्रेशन का. इज दैट हैपनिंग? सो दैट इज नॉट द केस. मतलब दिस इज वेरी स्कैटर्ड. आप ऐसे देख के आप बोल नहीं सकते कि अच्छा एज के साथ द डिक्रीज द डिजीज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके. सो यू कैन मेक अ स्कैटर प्लॉट रिलेशन लाइक दिस. ठीक है.
अब बीपी के साथ एक बार रिलेट करके देखते हैं कि बीपी के साथ इज इट इंक्रीजिंग? तो बीपी के साथ भी देयर इज नो सच ग्रेट रिलेशन दैट यू कैन सी। अगर आप देखो ये विजुअल बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि अगर एज कम है जनरली आपका डिजीज प्रोग्रेशन कम हो रहा है, बट ये बहुत स्कैटर्ड है, ये भी बहुत स्कैटर्ड है। सो यू कैन सी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बीएमआई एंड वाई। क्लियर गाइस?